बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दी फार्मा एज। डियर गाइस, और मैं आपको बताया कि मैं अपने इस चैनल के अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। तो आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से है। आप देखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो पूरे पाकिस्तान की हैं, उसमें चाहे नेशनल कंपनीज़ हों या लोकल कंपनीज़ हों, पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की जो वर्थ है वो 1.5 ट्रिलियन है। आप देखें कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर हम सिर्फ एक चीज़ को देख रहे होते हैं कि हमने मेडिकल लैब कैसे बनना है और उसके बाद फील्ड मैनेजर कैसे बनना है और उसके बाद आगे कहाँ जाना है। तो हम अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं वो यहाँ पर आके ज़ाया कर देते हैं। तो मेरी इस वीडियो के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस किया है और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको आगे थोड़ा इसको शेयर भी करें और कमेंट्स में मुझे आप लोग लाजमी याद रखें ताकि मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि मेरी वीडियोस में आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो आइए आप अपनी वीडियो चलते हैं और उससे The pharmaceutical industry is a complex system made up of many specialized departments, all working together with one common goal: to develop safe, effective, and high-quality medicines for patients around the world. The journey begins in research and development, where scientists study diseases, discover new drug molecules, and test them in laboratories to identify promising treatments. These potential medicines then move into clinical trials, where doctors carefully test them on human volunteers to ensure safety, effectiveness, and proper dosage. Once trials are successful, Regulatory Affairs prepares detailed documents and submits them to health authorities for approval, ensuring the medicine meets all legal requirements. Quality assurance ensures that every process follows good manufacturing practices, while quality control tests raw materials and finished products to confirm quality and safety. Approved medicines are then produced in large quantities in the manufacturing department using validated equipment and controlled conditions. After production, medicines are packaged, labeled, and stored safely in warehouses before being distributed through the supply chain. Sales and marketing teams help medicines reach doctors and hospitals, while pharmacovigilance continuously monitors patient safety. Supporting all operations, human resources manage people, and engineering teams keep systems running smoothly, together delivering life-saving medicines worldwide.